So dear students, today in this video we will talk about further questions based on average and mean. We are discussing applied maths class 11th. So this first unit we were doing in the previous video, we have completed till question number 4. Now we will start with question number 5. The average weight of 8 persons increases by 2.5 kg. Question number 5. Average weight of 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. So that means there are total 8 persons. So let average of 8 persons, sum of 8 persons be x8 upon 8 is equal to x bar 8, right? Average is x bar, right? So out of these 8 persons, if one person replaces, when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg, so let the new person weight be x kg, or you can simply say average is equal to x1 plus x2 plus x8 upon 8. This is average, right? Currently this is average. Now this average x bar is equal to x1 multiplied by 8. If we bring this 8 here, so this will be x1 plus x2 plus x8. Now if one person replaces one of them by 65 kg, so let this be of 65 kg, let x8 be of 65 kg. So now a person comes into this group and replaces this x8, so the average increases by 2.5. so new average x dash new, this is new average, increases by 2.5. तो increases means पहले वाले से 2.5 बढ़ जाएगा, is equal to this will be x1 plus x2 plus. अब 65 हमने माइनस कर दिया, हटा दिया 65, राइट? So this will be, let the new x8 be x dash 8 upon 8, right? So what will be x dash 8, right? So if I reduce this 65 from this term, this sum, so x1, let us subtract 65 from both the sides. So 8 x dash bar minus 65 is equal to x1 plus x2 plus. Now x8 is 65. So if we have subtracted 65 from both the sides, so this will be x7. टोटल 8 टर्म्स है, 8वीं टर्म का वेट है 65 kg. तो अगर हम दोनों तरफ से 65 को माइनस कर देंगे तो 8वीं टर्म हट जाएगी. तो टोटल सम ऑफ 7 टर्म्स इज 8x bar minus 65. Now let the new number be n. जो नया नंबर आया वो है n, तो मतलब x dash 8 बार की वैल्यू कितनी होगी n. सो दिस विल बी 8 ब्रैकेट x बार प्लस 2.5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x7 प्लस n, राइट? हमको इसमें क्या बताना है, फाइंड व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन. तो नए पर्सन का वेट कितना होगा ये हमको बताना है. सो अप टू x7 सम इज 8x bar minus 65 plus n, this is 8x bar plus 2.5, right? So let us multiply. So this will be 8x bar plus 25 multiplied by 8 is 200, so this will be 20 is equal to 8x bar minus 65 plus n, this is n. 8x bar to 8x bar cancel, 65 को इधर ले आए तो 65 प्लस 20 इज इक्वल टू n. सो n की वैल्यू कितनी हो गई 85. सो दैट मीन्स नया जो वेट आया उसकी वैल्यू कितनी है, न्यू वेट या जो नया पर्सन आया उसकी वैल्यू कितनी है 85 kg. तो कितना इजी था, करने के काफ़ी सारे तरीके हैं. सबसे पहले हमने क्या निकाला, एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है, तो हमने सम ऑफ 8 वेट्स निकाल लिया, कितना आ गया ये. और हमको पता है 8th वेट जो है वो 65 kg का है, उसकी जगह कोई और आया है तो 65 को इधर ले आए तो 8x बार माइनस 65, तो ये कितना हो गया, सम ऑफ 7 वेट्स. सम ऑफ 7 वेट हमको पता लग गया.
अब हमको पता है कि नया जो वेट आया वो नए पर्सन के आने से जो एवरेज है वो 2.5 बढ़ गया। तो 2.5 किससे बढ़ेगा? पुराने वाले एवरेज से। पुराना एवरेज कितना था? x बार, उससे 2.5 बढ़ गया, ये है नया वाला एवरेज, है ना। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है, ये 8 को इधर ले आए तो दिस वी हैव गॉट। नाउ न्यू x डैश 8 इज n, हमने क्या माना हुआ? लेट द न्यू नंबर बी n, राइट, न्यू वेट भी n। सो सम ऑफ 7 वैल्यूज वी नो, इसको हमने उठा के कहाँ रख दिया? यहाँ पे, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिए, आंसर आ गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 6th, so in question 6, the captain of a cricket team of 11 members is 26 year old. So captain जो है वो 26 year old है, and the wicket keeper is 3 year older. तो wicket keeper जो है वो 3 years older है, मतलब 26 से 3 years ज़्यादा। तो wicket keeper की एज कितनी होगी? 26 + 3 29। 3 साल का wicket keeper थोड़ी ना होगा, older means उससे बड़ा। If the ages of these two are excluded, अब इनकी अगर हम एजेस को हटा दें पूरी 11 मेंबर्स की टीम में से, the average age of the remaining players, so remaining players की average age, मतलब जो कितने प्लेयर्स बचेंगे 11 में से, रिमेनिंग प्लेयर्स कितने होंगे? प्लेयर्स अगर हम 11 में से 2 प्लेयर हटा दें तो 11 - 2 9, तो इनकी एवरेज एज है ना, 9 प्लेयर्स की एवरेज एज। So let's say P1 + P2 up to P9 divided by 9. This is average age of 9 players, right? Sum of all observation upon total number of observation. Then the average age of the remaining player is means is equal to 1 year less than the average age of the whole team. 1 year less than the average age of whole team. ये पूरी टीम का एवरेज -1 ये है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एवरेज एज ऑफ 9 प्लेयर्स इज इक्वल टू एवरेज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स। तो ये फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो यही बनेगा एक्सप्रेशन, राइट। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ दिस होल टीम। सो दिस वी हैव टू डिटरमाइन, राइट। So we have, so far we have only 2 information, that these 2 weights are reduced from this, right? So let us put the value. Average age is equal to P1 plus P2 plus P9 plus P10 plus P11 divided by 11. So 11, this is divided by 11, okay. So P1 plus P2 plus, okay, here what we can do here, we can simply, we can simply divide it by P1 plus P2. This can be written as P9 divided by 11 plus P10 plus P11 divided by 11 - 1। इसको आराम से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, इसको इधर ले आए, P1 plus P2 plus P9 divided by 9 प्लस, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, तो -P1 plus P2 plus P9 divided by 11 is equal to P10. P10 की वैल्यू 26, P11 is 29 divided by 11 -1. So 26 minus 29 is 55. 55 divided by 11 is 5 -1. Now take P1 plus P2 plus P9 कॉमन। 9 प्लेयर्स का वेट को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1/9 minus 1/11 is equal to 5 - 1 which is 4. LCM ले लिए 99, 11 - 9 is 2, P1 plus P2
plus 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 P9. So this is 2 times 99 multiplied by 2. So P1 plus P2 plus 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 P9 is equal to 99 multiplied by 2 is 198 kgs. So total weight of 9 players is 198 kgs. Now we can easily determine the average age of the whole team. So average age of whole team is P1 plus P2 plus 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 P9 plus P10 plus P11 divided by 11. Sum of all weights divided by total number of players. So sum of P9 यहाँ तक का sum हमने निकाला हुआ है, it is 198 plus this captain weight is 26 plus 29 divided by 11. Just pause the video and solve this. Due to lack of space, I can't solve here. So the average age is 23 years. After solving, it will be 253 upon 11, which is 23 years. Next is question number 7. The average monthly income of P and Q is 5050. So average monthly income. So 7th. P plus Q. Average income P plus Q divided by 2 is equal to 5050. This is the average age of P and Q. Second, average age of Q and R. Average QR. Q plus R divided by 2. It is how much? 6250. 6250 rupees. Average monthly income of 6250 rupees. So if I say Q plus R will be equal to 2 multiplied by 6250. So which is 0, 10, 5, 12, 1250 Q plus R. From here P plus Q will be equal to 0, 0, 1, 1. So 1100, right? Sorry, 11,000. Similarly, this is first equation, this is second equation. Similarly, what do we have? We know that the average monthly income of P and R. So average of PR is P plus R upon 2. So it is 5200. So P plus R is equal to 0, 0, 4, 5, 2, 10, 1, 0, 400. This is third. So we have to find out the average age monthly income of P. Average monthly income of P we have to determine, right? So sum of all we know. So let us add 1 plus 2 plus 3. So this implies P plus Q plus Q plus R plus P plus R is equal to P plus Q is 11,000. This is 12500 and this is so 11,000 plus 12500 plus 10400. P plus P 2P, Q plus Q 2Q, R plus R 2R is equal to 0, 0, 5, 4, 9 and this 213 111 33 900. Taking 2 common or dividing this whole equation by 2, we can say P plus Q plus R is equal to 16950. 16950. Let this be fourth equation. अब चाहे हमको कोई सी भी वैल्यू निकालनी हो, P Q R हम तीनों की निकाल सकते हैं. अभी हमको P की निकालनी तो वो इक्वेशन, जस्ट सर्च फॉर दैट इक्वेशन इन विच P इज नॉट देयर. So we know that Q plus R is 12500. So 4 minus 2. Fourth equation minus second equation. So P plus Q plus R minus second equation is Q plus R is equal to 16950 minus 12500. So 0, 10 minus, 5, 9 minus 5 is 4, 6 minus 2 is 4 and this 0. So 44500. P plus Q plus R
minus Q plus R. So Q plus R cancel. So P is equal to this. So income of P is rupees 4450. If we have to determine Q's income, so we would have subtracted this P plus R from that whole equation. So we would have got Q's income. P इनकम निकालनी तो हमने ऐसे किया है, R इनकम निकालनी थी तो हम P प्लस Q को सब्ट्रैक्ट कर देते. सो दिस इज वेरी इजी. जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8. The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years. So let husband age be H years, wife's age be W years, husband, wife and their child, so child age be C years, right? H, W and C we have assumed. So average age 3 years ago. So average age 3 years ago. 3 साल पहले इनकी एजेस का एवरेज. 3 साल पहले हस्बैंड की एज H-3, वाइफ की एज W-3, चाइल्ड की एज C-3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टोटल कितना है 3 is equal to 27 it is given. So that means H plus W plus C minus 3 minus 9 divided by, और डिवाइड को हम उधर ले गए, 27 multiplied by 9. Now 27 multiplied by 9, so 270 minus 27, 250 minus 7, 243. H plus W plus C, 9 को इधर ले गए प्लस 9, so this will be 252 H plus W plus C. तीनों की एजेस का सम कितना गया 252. Now what we have to find out? We have to find out, okay, second equation, and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. So wife and child 5 years ago, let this be first equation. So 5 years ago, wife age will be W minus 5 and child age will be C minus 5 upon 2. Average age of these two 5 years ago was 20 years. 20 years. So W plus C minus 10. 5 plus 5, 10. 20 multiplied by 2 is 40. W plus C is equal to 50. Let this be second equation. Now we have to find out husband's age. So let's subtract first age minus first equation minus second, क्योंकि यहाँ पे तीनों की एजेस का सम दिया हुआ है, यहाँ पे वाइफ और चाइल्ड की एज का सम हमने निकाल लिया. तो हस्बैंड की एज कैसे आ जाएगी, तीनों को इन दोनों को माइनस कर देते हैं. तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड माइनस वाइफ प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 252 minus 50. 252 minus 50. This was 20 years, correct. Wife and the child 5 years ago was 20. So husband age will be 252 minus 50, 142, 162. Sorry, 202. Quite strange answer we have got. 202. 27 years तीनों की थी. 27 multiplied by, okay, this was 3. 27 multiplied by 3. So 27 multiplied by 3 is 27, 7, 3, 21, 1 and 2, 3, 2, 6, 7, 8, 81 plus 9 is 90. 90. So this will be 90 minus 50. So this is 90 minus 50 is 40 years. So husband age is 40 years. So this is the correct answer. Please pause the video and note down. 202 is quite strange age, so we have got that somewhere we have mistaken. So please pause the video and note down. So this is all for today's video.
In the next video, we will be discussing about this calendars. So please be in touch. And if you really like this content, you can subscribe this channel, or you can, if you want to share your valuable comments, so you can just comment in the comment box also. Thank you.